Hello everyone and welcome back. It's me, Chef James, and we are here doing another reaction video. We're doing the channel Chef Ranveer Brar, and the video title is Cooker Aloo Aloo Tamatar Curry. No clue what any of that means. I am, of course, a Western trained chef with 20 years of experience. Now, apparently, because of you, taking the deep dive into Indian cuisine. Why do I say it like that? Well, I did what I thought was a one-off of the Village Cooking channel, and it is one of my best videos ever. And if you guys are embracing me learning about Indian cuisine, then I'm going to learn about Indian cuisine. I'll leave a link up below to my other two videos where I reacted to the Village Cooking channel. 1, 2, 3 1, 2, 3 डिश का नाम क्या रखूं? 3 का तड़का। नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और आज बना रहे हैं डिश जिसमें सिर्फ 3 मसाले और 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, नाम आप रख लीजिएगा। By the way, this channel was recommended by a viewer who left a comment in one of my other videos, so that's why we're here. Already, production quality seems like this could be on TV, like this could be a Food Network show, and I do appreciate the English subtitles coming up as default, like they're already in there. I didn't have to click captions. बेसिक लेकिन मोस्ट अमेजिंग 10 मिनट में बनने वाली सब्जी है। एडिट तो छोड़ ही दीजिए, एडिट तो 10 मिनट के नीचे होगा ही होगा। 10 मिनट से पहले बन जाएगी सब्जी। साथ में रहिएगा, जाइएगा मत। Okay, so we already said this is going to be 10 minutes. So this is going to be a quick, real-time 10-minute shoot. I like those. इस सब्जी में 3 सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो हर घर में होते हैं। आलू, प्याज, टमाटर। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। जितने आलू उतने प्याज उतने टमाटर। और बोलो, वो भी सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। अगर आप ज़्यादा प्याज टमाटर नहीं खाना चाहते तो आप एक काम करिए, जितने आलू ले रहे हैं उतने ही प्याज और टमाटर मिला के ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ले रहे हैं 10 आलू तो 5 प्याज 5 टमाटर ले लीजिए, मर्जी है आपकी। Okay, so his ratios are similar to a French mirepoix, where he's saying 10 potatoes, 5 tomatoes, 5 onions. And in a French mirepoix, we would be doing... So that's 50, 25, 25. And in French mirepoix, we go 50% onion, 25% celery, 25% carrot, or 25% leek if it's a fish stock, or like something you want to keep white without the carrot color blending through. Now, we use that, basically, we wouldn't eat that as a dish on its own. We would use that, though, in soups, sauces, stocks. We might leave it in the case of a soup, or we might discard it after its job's done in the case of a stock. But as you can see, though, there are some rules that transcend cooking and transcend cultures when it comes to ratios. We're using onion as our primary, and he's using potato as his primary. And to make sure it stands out as the primary, it is twice as much as everything else put together. Hey, I hate to interrupt the video, but if you're getting any value out of this, could you please hit that subscribe button and leave a comment down below? मैं कह रहा, मैं ये वाली 10 मिनट में बन जाएगी, मैं देखना आप। इसका एक अलग से मोन्टाज बनना चाहिए कि कितनी बार रणवीर ने बोला है कि ये रेसिपी 10 मिनट में बन जाएगी। ये अलग ही चल रहा है एक शो। फ्लैशबैक। होपफुली 10:30 मिनट में एडिट कर 10 मिनट के नीचे खत्म हो जाएगी और ये वाली रेसिपी 10 मिनट के नीचे एडिट हो ही जाएगी। Are you comedy me? देखिए, टमाटर 2 तरीके से करना है। एक तो बारीक चॉप करना है और एक मोटा डाइस करना है। बारीक चॉप जाएगा कुकर में क्योंकि उसका वैसे भी हलवा बनेगा, और जो मोटा डाइस है वो जाएगा बाद में तड़के में। लेकिन इंग्रेडिएंट यही हैं बस, 3 का तड़का, 3 मसाले, 3 सब्जियां। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये है जी सरसों का तेल। अभी क्या है, आलू प्याज टमाटर हर एक के घर में होता है, तो ये बहाना तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा कि भैया ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। बहुत बहाने बना लिया आपने, अब नहीं होगा। कुकर भी सबके घर में होता है।
I don't think everybody has a pressure cooker at home. We've got an Instapot, so that's an electric pressure cooker, but your traditional pressure cooker, tight fitting lid, the steam builds up. Basically, it gets under pressure because water can never go past 100 degrees Celsius or 212 Fahrenheit. When it goes past that, it converts to steam. Steam can get a lot hotter. When you apply pressure, you prevent it from steaming, and you do cause the water temperature to increase, and that's how pressure cookers work. अरे मैं ऐसा कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे भाई, वहीं लेके आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जीरा, सौंफ, काली मिर्च और राई, यही है बस कहानी, इसी से होगी भरपाई। कोई बेमानी नहीं है। देखिए, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और राई। सरसों के तेल का झांझ निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरसों के तेल से स्मोक आने लग जाए, उसको गैस से साइड रख दीजिए 2 मिनट के लिए। क्या है कि अभी वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर से वो जो झांझ है वो निकल जाएगा, तेल जो है वो नटी हो जाएगा, फ्लेवर खूबसूरत हो जाएगा उसका। So the nutty flavor that he's describing from letting the oil smoke. So normally we're taught not to let oil smoke. When you reach the smoke point, you have you've burnt it. Now he's doing it intentionally because I know a lot of people, professionally at least, that do like to, like a lot of home cooks don't know that. Like, oh, it smokes, take it off a minute, it's fine. And depending what you're making, yes or no, because he's doing it on purpose, a little slight burn on anything adds a bit of a nutty flavor. I know some people that do it intentionally, just like he's doing, and it's a trick you can play with. वापस चूल्हे पे चढ़ाइए, मामला डालिए अपना। हींग भूल गए हम। ओ माँ, क्या कुछ करना ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि रणवीर ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, आपने कहा था कि 3 मसाले, अब आप और मसाले नहीं डाल सकते, तो आप तेल में कोई मसाला मत डालिए, ठीक है? सिर्फ तेल गरम करके सीधा सब्जी डाल दीजिए। और बोलिए, कहीं से छोड़ेंगे नहीं हम रास्ता कोई, ठीक है जी? प्याज को बड़ा बड़ा काटना है। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब सुनते रहे हैं। प्याज को नहीं, आलू का बड़ा बड़ा काटना है। मतलब अगर मैं ध्यान ना दूं तो यहां तो सब हमारी बेइज्जती कराने तुले हैं। रणवीर बरार भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ में। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो सिर्फ ये लो जी, अपनी इज्जत डालो कुकर, सॉरी टमाटर डालो कुकर में। So he's saying that nobody corrected him. I'm guessing he's talking about his production crew. That I guess his original version of this probably, like he says, the potatoes should be big, the onion should be small. If you do everything around the same size, it'll cook evenly. But, you know, maybe you don't want big chunks of onion. देगी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। Okay, so we're up to 10 ingredients. He had the 3 vegetables, the onion, the tomato, the pepper. Not pepper, onion, tomato, and potato. He had he started out with 3 spices that he steeped in his oil. He added a 4th one in just as he moved it off to the side. So that's 7. And now he's added 3 spices. So we're up to 10, 11 if you count the oil. If he salts and peppers this, we're at 12. 3 मसाले, देगी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, बेडगी मिर्च, बेसिकली रंग वाली मिर्च।
किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं भैया, और इस देगी वालों को तो नहीं करते हैं। बस अब क्या है कि हल्दी पकानी है बस। जैसे हल्दी पक गई वैसे है, लो जी, मैंने बोला 10 मिनट में कहानी खत्म है। फाइनली एक ऐसा वीडियो होगा जो रणवीर बोलेगा और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं तो जैसा मैंने कहा, बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हैं सब। लो जी, गया नमक, ये गया पानी, और खत्म है इसकी कहानी। पानी इतना कि बस ढकी ढकी हो, रसमी सी बनानी है सब्जी। कुकर नहीं लगेगा, पहले वाले अच्छे होते थे कुकर, ऐसे घुमाओ फिर ऐसे करके लगा दो। ये मॉडर्न है। जैसा मैंने आपको कहा था, 3 सब्जियां, 3 मसाले और गेम ओवर। अभी एक तड़का बनाना है, उसमें लेनी है सूखी मिर्च। देखिए मिर्च सेम इंग्रेडिएंट हुआ ना, पिसी डालो सूखी डालो एक ही बात है, वो अलाउड है। और साथ में लेना है टमाटर, ये मोटा डाइस करके। पहले अगर सारा टमाटर आप डाल देते, टमाटर गल जाता, हलवा बन जाता। टमाटर का खड़ापन जो है वो आपको मिलता नहीं, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था टमाटर 50-50 स्प्लिट करना है, बारीक चॉप किया हुआ पहले, मोटा कटा हुआ तड़के के साथ, और साथ में सूखी मिर्च। और सूखी मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस से वही देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना फार्मूला ब्रेक किया, ठीक है। That was a mouthful, but I basically got the gist of it. The subtitles were going a little fast for me, and he wants you to do the tomato in 2 portions, so that way it's not all mush. I see. Is this going to be a soup? तड़के में फिनिशिंग में थोड़ा घी यूज़ करेंगे। So ghee, clarified butter, that's another ingredient. हो गया, बस इतना ही है, और मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, वरना फिर कहीं ऊपर इस बार मतलब अगर गलती से चला गया ना ऊपर 10 मिनट के। सरसों का तेल जो है ना वो बॉडी ऐड करता है, मतलब लंबे समय की जो पकाई है उसमें सरसों का तेल डालिए, सरसों के तेल का कैरेक्टर आ जाएगा उसके अंदर। और घी जो है फिनिशिंग के लिए डालिए, ऊपर से खुशबू के लिए, ठीक है। बजट में भी है और टेस्ट के लिए भी बढ़िया। When you take the lid off a pressure cooker, the pressure has to be released. If you are able to get the lid off without releasing the pressure, it's going to explode. If it reached pressure, that is. There's a valve that'll pop, and basically when that valve's up, you're not supposed to open it. I know I don't have an actual. I've only used an old school pressure cooker once or twice, but our Instapot, you can do it 2 ways. When it turns off, it lowers its own pressure as it cools off, or there's a release valve that will blow it out in a direction, and you aim it away from you, you hit the release valve. But some people say that does cause, that rapid change does cause some stuff to dry out. ये लो जी, अभी बस इसको लास्ट में एक बॉयल देना है,
5 मिनट के लिए एंड डन। 5 मिनट में 3 मिनट के लिए। देखिए खाना अच्छा बनने की खुशी तो मुझे है, उससे ज़्यादा खुशी है 10 मिनट के नीचे की रेसिपी बनने की। डन है जी। अब लास्ट में धनिया। देखिए धनिया किसी इंग्रेडिएंट गिनती में नहीं आता। धनिया इज मोहब्बत, इट डज नॉट काउंट एज इंग्रेडिएंट। ओके, तो ये आप मेरे को जज नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, टमाटर की खटास, प्याज की मिठास, आलू की बॉडी और मसालों का चटकपन। क्या था वो? हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हमने घर की दाल को मुर्गी बराबर बना दिया साहब। वही बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स, वही बेसिक 3 सब्जियां, बेसिक 3 मसाले, और देखिए क्या एकदम जानदार शानदार हो गया। All right, and that was Chef Ranveer Brar, and what we would just simply I would just say it's a vegetable curry soup if I were to describe it in a Western way. It looks very good, like very basic. Looks like something mom would make while you're outside. Looks very flavorful too, and that's one of the things where Western cooking differs, because we have basically gotten to a point in our cuisine where, at least in North America, it's almost like we demand meat at every meal of the day. Breakfast, that's the one where you can skip it, I guess. So lunch and dinner for us almost always have to have meat. And it doesn't need to. It doesn't need to be that way. You can see very well that people who eat an Indian diet, they don't eat meat with every meal, and there's nothing wrong with them. A lot of people over here in North America, we're fat. A lot of us are fat and overweight, myself included. And I don't know if it's because we eat meat with every meal, or if it's all the processed foods we eat, all the salt in our diets. Anyways, that's neither here nor there. What is important is that actually looks pretty good, and it's a simple vegetable stew that anybody can make. Without the pressure cooker, probably more like 45 minutes. He used that as a nice little hack to cut some time off. Looks pretty tasty though. So if you like this video, let me know. Leave some comments down below. Tell me if there's any other Indian chefs that I should be looking up.